Very good morning to you and welcome back to Byju's गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब चैनल। तो अभी पिछली क्लास में जैसा कि आपने देखा था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड पार्ट के और पार्टनरशिप के। नाउ वी आर डिस्कसिंग, एज आई टोल्ड बिफोर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and very widely asked in all the examinations, across all the examinations, and that is time and work, समय और कार्य। यहीं पे तो सारी गड़बड़ होती है। कार्य हमेशा ज़्यादा होता है और समय हमेशा कम होता है। चले जी, आपको भी फिर से मेरा प्रणाम। पवन कुमार यादव जी, रिक्की, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2017 में लास्ट पेपर कंडक्ट हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बिहार ऐसा ही भी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर कंडक्ट नहीं हुआ था। यहां पर आपको यह जानना होगा कि इतने समय के बाद जब कोई पेपर आता है तो लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए do not decide about the level just looking at the previous year papers. All right? There is always a chance and it is always better to be prepared for a difficult paper. तो यहां हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद gradually we will graduate on to a higher level. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये है आपके सामने तीन चीजें जिसके ऊपर सारा का सारा गेम जो है वो आधारित है। टाइम, समय, वर्क, कार्य, वर्कर्स या मैन या कर्मचारी जो कि काम करेंगे, जो कि आज की डेट में कोविड की सिचुएशन की वजह से सब लोग घर पे हैं, सब सेफ रहना चाहते हैं। तो कुछ ही लोग हैं जो काम पे वापस जा सके हैं और बाकी लोग जो है अभी वो वेट कर रहे हैं कि कब स्थिति थोड़ी बेहतर हो और फिर वो कामकाज अपना जारी रखें। तो आप ये देखिए कि अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है, स्थायी है, तो वर्क और वर्कर्स के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कोई काम है, हमारे पास में केवल 10 ही दिन हैं कि उसमें हम जितने भी काम करने चाहें हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर टाइम यहां पर स्थायी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए 10 डेज है, मैंने आपको वर्कर्स दिए कि भैया 10 डेज हैं, इनसे जितना काम करवाना करवा लो। नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड वर्कर्स। अब कार्य और कर्मचारी, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा। भाई जितना ज्यादा काम होगा उतने ज्यादा आदमी चाहिए होंगे वो काम करने के लिए, जितना कम काम होगा उतने ही कम आदमी चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो सीधा मतलब निकल कर आता है कि वर्क और वर्कर्स ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना काम उतने वर्कर्स, ज्यादा काम ज्यादा वर्कर्स, कम काम तो कम वर्कर्स, सिंपल एज दैट। सचिन गुड मॉर्निंग, समीर गुड मॉर्निंग, चंदन गुड मॉर्निंग, तुषार गुड मॉर्निंग, निशा गुड मॉर्निंग, सत्येंद्र तिवारी जी नमस्कार। मुझे आपका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। अब इसी तरह से अगर देखें, अगर काम कांस्टेंट है, वर्क इज कांस्टेंट, यानी कि काम जो है मान लेते हैं कि वो स्थायी है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। नाउ हियर व्हाट डू आई मीन बाय दैट। अगर ध्यान से देखो तो मान लेता हूं कि मुझे एक रूम कंस्ट्रक्ट करवाना है। ये मेरा मकान बना हुआ है, मैंने कहा चलो एक्सटेंड करते हैं, तो एक रूम कंस्ट्रक्ट करना है। अब रूम कंस्ट्रक्ट करना है, ये काम तो स्थायी है ना। नाउ व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वर्कर्स। वेल, मोर द वर्कर्स लेस विल बी दी टाइम रिक्वायर्ड। जितने ज्यादा कर्मचारी होंगे, जितने ज्यादा काम करने वाले वर्कर्स होंगे, उतना ही समय कम लगेगा। एंड ऑब्वियसली लेस द वर्कर्स मोर विल बी द टाइम टेकन। तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइम और वर्कर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। नाउ व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टे हुए भाई।
यार इसे थोड़ा इस तरह से मैंने लिख दिया, इसे जरा मैं थोड़ा अलग से लिखता हूं, 1 बाय वर्कर्स ले लेता हूं, दैट इज बेटर, राइट? सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. गुड मॉर्निंग रोहित यादव, वेरी गुड मॉर्निंग चंदन झा, अभिनव झा, गुड मॉर्निंग. तो ये रिलेशन हुआ टाइम और वर्कर्स का. अब तीसरा देखते हैं कि अगर आपके पास में वर्कर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं कि भाई मेरे पास में तो 10 ही एम्प्लॉय हैं, आई हैव ओनली 10 वर्कर्स, ऑलराइट? सो हियर दिस इज फिक्स्ड. 10 के ना 11 वर्कर हो रहे हैं ना 9 वर्कर हो रहे हैं, करवा लो जो काम करवाना है. तो सीधी बात है, मोर द वर्क मोर विल बी द टाइम टेकन, है ना? और इसी प्रकार लेस द वर्क लेस विल बी द टाइम टेकन. तो यहां हम क्या कह सकते हैं? यहां हम कह सकते हैं कि वर्क और टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब ये बड़े इंपॉर्टेंट से रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम जैसे होता था ना. यहां पे हम कोई फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं, सच निकलेगा भी आगे जाके, ऑलराइट? लेकिन यहां पर आप ये जरूर समझें कि कभी अगर ग्राफ पे ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया या कोई और क्वेश्चन आ गया, आपको बेसिक्स तो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए, ठीक? इसके अलावा आप ये जानें कि कोई भी प्रोजेक्ट, खासकर आईटी इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो इट इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ मैन डेज. नाउ व्हाट इज अ मैन डे? मैन डेज, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज. तो सीधी बात है कि किसी भी काम का मेजर जो है वो मैन डेज में होता है. तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट लिया हमने और वो प्रोजेक्ट है 100 मैन डेज का. तो जब प्रोजेक्ट है उसकी जो एबिलिटी है या उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसमें जितनी मेहनत लगनी है वो है 100 मैन डेज. इसके बाद में डिसाइड होगा कि इसकी डेडलाइन क्या है. डेडलाइन मतलब ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म हो जाना चाहिए, बाय व्हाट टाइम दिस प्रोजेक्ट शुड गेट ओवर. तो इफ एट ऑल लेट अस से दिस इज मैन, दिस इज डेज. सीधी बात है, मल्टीप्लीकेशन है. इफ यू वांट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 25 डेज यू रिक्वायर 4 मैन. 4 into 25 is 100. If you want to complete the project in 10 days you require 10 workers, right? Or agar you want to complete the work in 20 days then obviously you require 5 workers. 4 into 25 is 100, 10 into 10 is 100, 5 into 20 is 100. सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक? तो प्रोजेक्ट आपको हमेशा मैन डेज में मिलते हैं. अगर आप में से कोई आईटी इंडस्ट्री में हो या जाना चाह रहे हो तो उसके बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा. प्रभात, ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाता हूं, हाँ, लेकिन आप ये कमेंट एक बार डाल सकते हैं. इतनी बार डालेंगे तो मुझे लगता है कि जो लाइव चैट है उसी का ज्योग्राफी बिगड़ जाएगा, है ना? चलिए, तो अब आगे चलते हैं और बहुत ही बेसिक के ऊपर चलते हैं. यदि ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः x दिनों तथा y दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को xy बटा x प्लस y दिनों में समाप्त करेंगे. दिस फॉर्मूला विल बी वेरी यूजफुल इफ एट ऑल देर आर ओनली 2 persons गिवन टू यू. अगर आपको केवल 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा ही यूजफुल होता है, बड़ा ही कारगर होता है. लेकिन ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस जो आपको अगर आते हैं तो आपको एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी. लेकिन मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि इसके बेसिक्स हैं क्या. उसके बाद में बेसिक्स के ऊपर तो आप कुछ भी हिसाब किताब बना सकते हैं. एक बार तड़का लगा देते हैं, उसके बाद गार्निशिंग करने में क्या है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, है ना, थोड़ा सा सजा देंगे हरी मिर्च डाल के. तो ए का एक दिन का काम, व्हाट इज 1 day वर्क ऑफ ए? सो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज A1. इट विल ऑलवेज बी, लेट अस से 1 by A. बी का एक दिन का काम, B is 1 day work, we should write as 1 by B. Why? Let us say that A can complete a work in 10 days. मान लेते हैं कि A एक काम 10 दिनों में कंप्लीट करता है. तो एक दिन में A ने कितना काम किया? 1 by
10। 2 दिन में कितना किया? 2/10। 5 दिन में कितना किया? 5/10। ऑब्वियसली अगर 10 दिन में पूरा काम खत्म करता है, इफ ए कंप्लीट्स द होल वर्क इन 10 days, then in 5 days A will complete only half of the work, 5/10, correct? So ये जो नीचे 10 लिखा होगा ना, whatever value is given to you in the denominator, that denotes the total number of days in which a person can complete the work. So I can say here, let us say amount of work done by A in X days will always be equal to X by A. A क्या है? A is the number of days in which A here is number of days in which A can complete a work, है ना? So 1 day वर्क ऑफ ए, अगर ए एक काम को 10 days में खत्म करता है तो 1 day वर्क ऑफ ए विल बी 1/10. So 2 days वर्क ऑफ ए विल बी 2/10. 5 days work of A is 5/10, which is half. 9 days work of A is 9/10. 10 days work of A is 10/10, that is one work. Alright, unit work कहते हैं ना हम उसको, unit work. Alright, so ये एक चीज है जिसको आपको हल्का फुल्का सा याद रखना है. अरे नहीं सुनील, आपको फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप देखते जाइए. कंसेप्ट के ऊपर चलो, फॉर्मूला क्या होता है यार, चिंता मत करो, बहुत आसान है, आप देखते जाएं. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करें. Yeah, Prashant, actually speaking, IBPS classes I'm conducting mostly in English, all right, because DPC and Bihar SI crowd mostly is Hindi speaking, all right. So that is the reason why in this particular batch you would find that, my bias would be towards Hindi medium, but then still, because you're here, I would try to translate in both the languages so that you are comfortable. All right, तो अभी मैंने I had already taught you a formula that is xy by x plus y. All right, A alone and B alone can complete a work in 10 days. So A can complete a work in 10 days. B can also complete the work in 20 days, same work. Then in how many days will they complete the work together? So use this formula, 10 into 20 by 10 plus 20. All right, so leave it as it is, no? 10 into 20 by 30. A 0 goes. Okay, so 20 by 3 days, which is nothing but 6, 2 by 3 days. That is by using this formula. नहीं करना है use formula, you don't want to use the formula, तो बेटा there is another way. Now see, A here can complete a work in 10 days, and B can complete the same work in 20 days. So I hope this is very clear. Now you have to take the LCM of these two. 10 and 20, you know the LCM is 20 itself because 20 is divisible by 10. क्योंकि 20 जो है वो 10 से भाग होता है, तो 10 और 20 का जो लघुत्तम समापवर्त्य इस तरह से बोलते हैं ना, तो LCM जो है वो तो 20 ही आएगा. तो बाकी देख लो यार कि 10 into 2 is 20, 20 into 1 is 20. So as to say, A will here do 2 units of work and B here will do 1 unit of work. So together they do 3 units of work in one particular day. All right. So the total number of days taken by them is going to be 20 by 3. All right. So there are total 20 units of work. A and B together in 1 day can do 3 units of work. Total unit of work जो है, कार्य जो है, वो है 20 इकाई, 20 यूनिट्स. और A एक दिन में 2 इकाई या 2 यूनिट काम करता है,
बी 1 यूनिट काम करता है। कैसे आया ये? अरे यार 10 इंटू 2 20 होता है, 20 इंटू 1 20 होता है। एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद में आप देखो कि ये जो नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला है, तो उन नंबर्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको ये एलसीएम मिल रहा है। 10 और 20 का एलसीएम 20, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 10 इंटू 2। 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 1 से। सो टोटल आ गया 3, 2 + 1। सो 20 यूनिट्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स 1 डे वर्क, so that again is nothing but 6 2/3 days, whatever you are comfortable with. All right, so I would definitely suggest this method because आगे जाके ये ज़्यादा काम आएगा। और जैसे कि मुझे पाठक साहब ने भी कहा कि सर कितने फॉर्मूले याद करेंगे, तो बेटा एक फॉर्मूला कम कर देता हूँ मैं, आप एलसीएम मेथड से करो, दिमाग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। फॉर्मूला रट के मैथ्स थोड़ा होता है यार। ऑलराइट, okay, good. So now let's go ahead and try to solve this question. You have to be fast now, guys. Jaldi karo. You have to be fast. Come on, guys. You're welcome, Satyendra Tiwari sahab. Yes, Ashok, yes, Abhinav, Manjeet, Vijendra, please check. मंजीत प्लीज चेक। सेकंड वाला जो आंसर है आपका, ये 20/2 आपने गलती से कर दिया बेटे। वो 3 टाइप कर रहे थे, आपका 2 टाइप हो गया। आई नो दैट। करेक्ट, स्ट्राइडर रोग, यस। अमन जायसवाल, अभिनव झा, सुनील पाठक, चंदर झा, सुहास, मंजीत, अभिनव, पवन, रिक्की, तुषार, प्रशांत, दुर्गेश, अशोक, चंदन, शुभम। ऑलराइट, तो करना क्या है यार यहां पर? अभी आपको आई टोल्ड यू नो इट इज xy बाय x + y। ऑलराइट, सो x alone and y alone can complete a work in 20 and 30 days. X can complete a work in 20 days working alone, y can complete the work in 30 days. So it is 20 into 30 by 20 plus 30. Alright, so that is nothing but, इसको ऐसे ही रखो, इसको 600 बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। बाय 50 करो, ये गया, ये गया। So what you get here is 12 days. Now the other method, the LCM method, where you find the LCM of these two numbers. Okay, तो अपने को x और y दिए हुए हैं ना यहाँ पर। So x can complete a work in 20 days, y can complete the same work in 30 days. So 20 and 30, the LCM here you know is 60. Now you should be fast at calculating LCM. LCM जल्दी से calculate करना है ना। तो now how many units here? 20 into 3, 30 into 2. So total 5 units. So 60 by 5. 60 units by 5 units work in 1 day. That is 12 days. देख लो भाई, जो आसान लगे उससे कर लो। Absolutely yes, Ricky, it would suffice. For DPC, Bihar SI, it would definitely suffice. Alright, और वैसे भी एक क्रैश कोर्स है ना। अगर आप दूसरे एग्जाम्स अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, CHSL है, CGL है, या तो कोई और एग्जाम है, तो these basics would definitely help you, but you would require more practice, so you should be solving more number of questions, but basics would be the same. Priyanshi, hi. Yes, Swati. Okay, now let's move ahead. शाबाश। अब इसका भी आंसर अब तो जल्दी हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, चलो। मैं ठीक हूं देवेश, आप कैसे हैं? हाँ, एज के भी प्रॉब्लम्स आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। वही 30 सितंबर के बाद में मेरी क्लास आपके साथ में ऑलमोस्ट हर रोज होगी। एवरी डे आई वुड हैव अ क्लास विद यू, मॉर्निंग 8 to 9 AM एवरी डे। वेरी गुड सत्येंद्र, कैसा हुआ आपका पेपर बेटा CHSL का? और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आपको?
जरूर बताएं, बाकी सबको भी काम आएगा। यदि P तथा Q अकेले किसी काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? If P alone and Q alone can complete a work in 10 days and 15 days respectively, so 10 into 15, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 plus 15, so 10 into 15 by 25, alright, 5 3 za, 5 5 za, 5 2 za, alright, total 6 days आने चाहिए। या तो ऐसे कर लो, या फिर you can use the LCM method. So P here can complete a work in 10 days, Q can complete the work in 15 days. बेटा LCM निकाल लेना। In fact, you should memorize LCM of few of the numbers. मैं आगे करवाऊंगा आपको। I will give you some groups of numbers ताकि उसके LCM हम याद रख लें। हो जाएंगे। जब बहुत सारे questions में if in so many questions you would come across these numbers, then automatically by default, naturally, obviously you would be able to memorize those LCMs. They would get installed and registered into your mind. Okay, so here we have 3 units, here we have 2 units, total 5 units, so 30 by 5 बन गया काम 6 days. Over. अब ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या, व्हाट इज योर स्पीड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। I will, Sanjeev, just have a little bit of patience, beta. I will be solving all the type of questions. A and B start working together, then A leaves after 5 days, then in how much time B alone will complete the work. A, B, C start working together, A leaves after 1 day, B leaves 2 days before. अच्छे लेवल के questions करेंगे, start तो करने दो बेटा। There are other students also, no, who are doing it for the first time. कोई बात नहीं पूर्णिमा, but first method xy by x plus y would be useful only for 2 persons. आगे 3 persons आएंगे तो फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें फिर ज्यादा हो जाएगा। Yes, mensuration also I would be taking up. Mensuration 2-dimensional, 3-dimensional, both we will be doing. Don't worry. A तथा B मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। A and B together can complete a work in 6 days. And A alone can complete the work in 10 days. Then in how many days can B alone complete the work? यदि A अकेला उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अच्छा, अब इस काम में आपको क्या करना चाहिए? दिस टाइम यू शुड टेक, बिकॉज अब आपको टोटल डेज पता है 6 डेज। एक्चुअली ये पिछला ही क्वेश्चन है, मैंने घुमा दिया थोड़ा सा। सो दिस टाइम यू टेक इट एज दिस। सी, दिस इज वेयर यू विल हैव अ प्रॉब्लम पूर्णिमा। यू विल हैव टू मेमोराइज वेरियस वेज हियर देन। ओके, सो यू हैव अ 10 into 6 by 10 minus 6. Alright, so this is 60 by 4. So A alone, A नहीं है यार, B है। So B alone can complete that work in 15 days. LCM method ले लो। So A here can complete the work in 10 days. A and B together can complete the work in 6 days. Now what would be the LCM here? 30 into 3 into 5 कितना आ गया? 8 आ गया, लेकिन 8 नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज यू विल हैव टू सबट्रैक्ट दीज। तो इसको मैं उल्टा लिखता हूं। A and B can complete a work in 6 days. A alone can complete the work in 10 days. Alright, 30 आ गया इसका LCM. Alright, so 6 into 5, 10 into 3. This time take the difference between the two. 5 minus 3 is 2. 30 by 2, 15 days. अब इसका मतलब क्या है? Why did I subtract? See, A and B together can complete a work in 6 days. A और B साथ साथ मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। उसमें से A और B में से एक ही कैपेसिटी क्या है? एक ही काम करने की क्षमता है कि वो उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। व्हाट इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए?
A can complete that work working alone in 10 days. All right, then what about B? Out of A and B, you got A. So what is remaining? B is remaining. So difference between the two will give you B. See, if A is given, B is given, then you will add them to get the work done by A and B. Okay, ये मैं आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं. But if A and B is given and A is given, all right, then difference between the two will give you, and how much time can B alone complete the work? That's the only logic. Devesh Pandey, खामोश. All right. P तथा Q किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं. चलो करो, पहले तो सॉल्व करो इसको. शाबाश. All right, so what do we have here? P तथा Q किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं. P and Q can complete a work together in 18 days. यदि P अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त करता हो, if P alone can complete the work in 30 days, then in how many days will Q alone complete the work? See, I told you this. So either you use the method xy by x minus y, where x is the higher value. Okay, तो हायर वैल्यू यहां पर क्या है? 30 और 18 दिया हुआ है. सो 30 इंटू 18 बाय 30 माइनस 18, सो दैट इज 30 इंटू 18 बाय 12. मैं दोनों मेथड कर रहा हूं. ऑलराइट, सो 6 2 जा 6 3 जा 2, दिस इज 15, 45 days. ऑलराइट, so P alone can complete the work in 30 days, Q alone can complete the work in 45 days. पवन 15 कैसे आया बेटा? All right, LCM मेथड से करते हैं. Okay, see, P and Q together can complete a work in 18 days, out of which P alone can complete the work in 30 days. P और Q मिलाकर एक काम को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जिसमें से P अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है. तो Q अकेला कितने दिनों में करेगा? ऑलराइट, सो P and Q is given. P is given. You need to find out Q. So we will subtract. Subtract what? The units. LCM क्या आता है? 18 और 30 का. बहुत आसान है, टेबल चला दो. बड़े नंबर का टेबल चलाओ. 30 है तो मतलब लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, तभी तो 30 से डिवाइड होगा. 32 जा 60, 60 डिवाइड होता है 18 से? नहीं होता. 30 इंटू 3 90, 90 डिवाइड होता है 18 से? इज 90 डिविजिबल बाय 18? यस. ऑलराइट, सो वी गॉट द एलसीएम एज 90. सो इंटू 5 इंटू 3, डिफरेंस वी विल टेक, दैट इज 2. सो 90 बाय 2, दैट इज 45 days शुड बी आवर करेक्ट आंसर है. यस सत्येंद्र तिवारी, यू आर करेक्ट. एलसीएम मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाकर इसकी एप्लीकेशन ज्यादा होगी. यू नो, इन ऑल द क्वेश्चंस दैट वी वुड बी सॉल्विंग henceforth, the importance of LCM method will be more, and it is faster also, and it makes more sense. This is just a formula, है ना? And this is logic. So we are all logical people. Okay, now please do this. हरी अप, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ. करेक्ट, अभी तो किया आपने ये. तो चलो फिर यहां पे करना है. तो 6 days 15 days, 15 इंटू 6 बाय 15 माइनस 6,
15 into 6 by 9, alright, 3 3s are 3 5s are 3 2s are, so आ गया कितना 10 days. यहां पर वी हैव एक्स एंड वाई ना यार, ये कभी एक्स एंड वाई आ जाता है, कभी ए और बी आ जाता है, कभी पी और क्यू आ जाता है, घड़ी कंफ्यूजन हो रही है. एक्स एंड वाई 6 days, ऑलराइट, वाई अलोन 15 days, तो इसमें से y तो मिल गया. अब x चाहिए तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे. अच्छा 6 और 15 है ना, इसका एलसीएम लो. एलसीएम लेने का यही तरीका है, बड़े वाला नंबर का टेबल चला दो. ऑलराइट, जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ द लार्जर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ दीज टू. सो विच इज द ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ दीज टू? 15. 15 ones are 15. Is 15 divisible by 6? Is 15 divisible by 6? 15 तो 6 से भाग नहीं होता. ओके, 15 2s are 30. 30 is divisible by 6? Yes, LCM आ गया. Okay, so you get 30. 6 into 5, 15 into 2. हो गया काम. So now we need to find out x. So take the difference. So what you get here is a 3 units. So 30 by 3, that is 10 days. सही पकड़े हैं तुषार, सीता और गीता भी. हां, 3 लोगों के बारे में बात करते हैं भैया. ये तो बेसिक है. देखो, इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क वर्किंग टुगेदर, देन 1 day वर्क ऑफ ए बी एंड सी कंबाइंड is 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. All right. Prashant, if you are there, you please tell me, are you comfortable now? As I am trying to speak in English as well. So please let me know. Okay. So let us say that A can complete a work in 20 days. B can complete the same work in 24 days. C can complete the same work in 30 days. I just want to tell you, 1 day work of A, B and C combined. A, B और C का एक दिन का कार्य और कुछ नहीं होता है. ये होता है 1 by 20 plus 1 by 24 plus 1 by 30. बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, A, B और C का 1 day का वर्क is A's 1 day work plus B's 1 day work plus C's 1 day work. See, you should know this. Apart from LCM method, you should know this expression. All right. So what is A's 1 day work? 1 by A. I told you, no? If A can complete a work in 20 days, this 20 has to come here in the denominator. All right. That is what we got here. Okay. What is B's 1 day work? 1 by B. So B here is how much? B can complete a work in 24 days. तो यहां पे 24 आएगा. 1 day work of C is 1 by C. C can complete the work in 30 days. तो यहां डिनोमिनेटर में 30 आएगा. LCM मेथड यूज करो, कोई इशू नहीं है. यू कैन यूज LCM मेथड. ठीक है अशोक, अशोक समझ में आया आपको? आएगा आएगा करके मैंने कितनी बार बोला यार. चलो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करो और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए. जस्ट ट्राई दिस आउट, कम ऑन गाइस. अच्छा शुभम, बंगाली अच्छी. खूब बोलो दुर्गेश. Which one is too much time consuming, Hemant? Please tell me. All right. Now see here, अगर यहां पे आपको फॉर्मूला चाहिए, if you need a formula here, your attempt would go for a toss, boss. Formula is xyz by xy
plus yz plus zx. You know, many students tell me, "Arey, there is a formula. What is the need of doing all these things?" Arey, there is a need. When the calculations increase, that means time that you will take to solve the question will also increase. अरे भाई, अगर कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे तो पहली बात तो कैलकुलेशन लंबी होने की वजह से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सेकेंड थिंग, टाइम भी ज़्यादा लगेगा. तो अटेम्प्ट कैसे होंगे? क्वेश्चन तो आपको सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट? सो ये करना है तो करो, आई डोंट माइंड. 10, 12, 15, 10 into 12 into 15. Alright, 10 into 12 plus 12 into 15 plus 15 into 10. मेरा मन ही नहीं कर रहा है सॉल्व करने का. ये क्या कैलकुलेशन है ये? See how much time consuming this might be. अच्छा, ये फिर दोबारा लिखना मुझे 10 into 12 into 15 because you're not supposed to multiply them because you will be able to cancel. Okay, then 10 into 12 120 plus 12 into 15 180 plus 150. So 10 into 12 into 15. All right, this is going to be 450. हटाओ हटाओ 15 3 जा 3 4 जा 4. आंसर आएगा. You will get the answer, but in how much time? All right. Now, X can complete a work in 10 days. Y can complete the same work in 12 days. Z can complete the same work in 15 days. What is the LCM? अच्छा, मैंने आपको कहा था ना, I told you, no, always recite the table of the greatest of these numbers, highest number. So which is the highest number here? 15. 15 का टेबल चला दो. Alright, 15 is not divisible by 12 and 10. 15 जो है वो 12 और 10 से भाग तो नहीं होता है. Alright, so next number 15 2 जा 30 है ना, तो 30 भी भाग नहीं होता है यहां पे 12 से. So 15 3 जा 45 is not divisible by 10. 15 4 जा 60 is divisible by 10, divisible by 12. So LCM here is 60. Then this is into 6, this is into 5, this is into 4. Job done. So total units 6 plus 5 plus 4, 11 plus 4 is 15. So X, Y and Z together will complete this work in 60 by 15 days. That is 4 days. So try to solve questions and adopt LCM method. Formula oriented approaches, you know, they are never logic oriented approaches, right? And if at all you're logical in your approach, you would be able to solve any question on earth. Trust me. Only thing that the basics should be clear. The basic concept should be properly registered into your mind. Yeah, job is only for speed. You might be able to solve the question, but in how much time are you solving the question? आप हो सकता है प्रश्न बना लें, लेकिन कितने समय में बना रहे हैं जी? आंसर निकालना is not the aim. It's not the objective that you should be able to find the answer alone. The objective is you should find out the answer by using the shortest possible method, which will be most accurate, which would minimize the chances of committing an error, and which would take least time. चलो ये करके दिखाओ मुझे जल्दी से. अब इसमें कैलकुलेशन करो. एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. Yes, Abhinav. In short, speed and accuracy. Thank you, Simple. I will call you Simple. Everything is simple is so long. You are simple. So if someone tries to complicate you or complex you, don't get complex. Don't get complicated. All right? Stay simple, because it's all about simplifying life. Yes, it is Encore Games. It would suffice.
Don't worry. The pattern for DPC and for Bihar SI, I am giving you 1 to 2 difficulty levels upwards. In fact, my questions or the concepts which I would be teaching to you would be, if at all the paper becomes 1 notch or 2 notch above the difficulty level, all right, then also you would be able to attempt it. Don't worry. Rest is up to you. How much you practice. Okay, ji, so now I'm directly doing only through LCM method. Okay, let us do away with XYZ by XY by. So X can complete a work in 200 days. Bhai saab, ये तो बहुत बड़े-बड़े figures हैं. Y can complete the same work in 240 days. Z can complete the same work in 300 days. So, if you can get the LCM of 20, 24 and 30, forget 0. All right. If you can get the LCM of 20, 24 and 30, you just need to put a 0 in front of that. Batao ji. Highest number here is 300. 300 ka table chalao. 300 is not divisible by 240 or 200. Double of 300. 300 into 2 is 600. Divisible by 200? Yes. Divisible by 24, 240? Is it? Is it divisible by 240, 600? All right. So 300 into 3, 900. Divisible by 240? 900 is divisible by 240? I don't think so. Right? So, but 300 into 4 is 1200. Divisible by 200, divisible by 240, divisible by 300. So this is into 6, this is into 5, and this is into 4. So total here comes out to be 15. All right. So XYZ together will take 1200 by 15 days. So 15, 8 is 1200, 120. Okay. So in total, 80 days will be taken. Yes, correct. Simple. Yes, Praveen, 1 0 taken common. Correct. तो सिंपल हो गया ये तो. ठीक है, रेज करें हम थोड़ा सा लेवल. लेट अस रेज द बार, रेज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. Now let me talk about important LCMs. Okay, you people tell me. All right, and it would be better if you note down also. So I want you to find out first of all LCM of 10 and 15. What will be the LCM? I think quite simple. 30. 10 and 20. See, 20 here is divisible by 10 because 10 into 2 is 20. So obviously 20 here will be the LCM. Similarly, 10 and 30, LCM will be 30. Why? Because 30 is divisible by 10. क्योंकि 30 जो है वो 10 से भाग होता है, तो 10 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य 30 होगा. Okay. Now tell me about 15 and 20. 60. 20 का टेबल चलाओ ना यार. 20 ones are 20, not divisible by 15. 20 into 2, 40, not divisible by 15. 20 into 3, 60, divisible by 15. Correct? So that's how you should look at it. Okay. So now tell me 10 and 12. Okay, 10 and 12 is again 60. 12 5s are 10 6s are. Okay, now let me give you 3 numbers here. 10, 15 and 20. What will be the LCM? Once again, LCM here is 60. 10 into 6, 15 into 4, 20 into 3. Okay. 10, 12 and 15. Tell me LCM for these numbers. Shabash. Cholo cholo jaldi karo. हरियप्पा. हाँ, टेबल चलाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? यही है हमारा फेवरेट नंबर.
The retirement age, 60. 12 fives are, all right, 15 fours are, 10 sixes are, again. Okay, now you tell me 20 and 25. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. देखा मजा आ रहा है ना? 100. 25s are 25 fours are. All right. Now tell me 20 and 24. बोलो 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 बोलो. अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से. 20 has a 0 at the end. Now which multiple of 24 will have a 0 at the end? भाई एक तो 24 into 10 है 240. Half of that 120. Half of that 60. 60 is not divisible by 24. So 120. See, there are very simple ways of finding out LCM. Okay, you don't have to do 3 into 4, 4 into 5. All these things are not required. You are writing a competitive examination. आप एक competitive exam लिख रहे हैं, वहाँ पे step marking थोड़ा होगी कि कैसे निकाला LCM, कोई नहीं पूछने वाला. So you should adopt the shortest possible method, and that is table वाला, पहाड़े. Correct? चलो शाबाश. चलो एक और क्वेश्चन, एक और नंबर लेता हूं, बढ़िया सा धांसू सा. 20-30 बताओ यार. अरे यार फिर से आ गया ये तो, बार बार आ गया. 60 बहुत बार आ गया, बहुत बार आ गया, है ना. एक और लेता हूं, अच्छा सा नंबर लेता हूं इस बार. ओ बेटा अब बताओ 25-35 बताओ जरा, देखें जरा कितना बढ़िया करते हो. 25-35 बताओ. अब बेटा अब यहां पर तो करोगे आप. दिस इज 5 into 7, दिस इज 5 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर into 7, 25 into 7, 175. ऑलराइट. तो ये कुछ चीजें तो हमें आनी चाहिए भाई, क्यों नहीं आएंगी. अगर ये सब चीजें आपको रटी हुई हो, इफ एट ऑल यू लर्न दीज बाय हार्ट, you would save time during the examination for finding out these LCMs, and you would not go wrong. And now, how would you be able to memorize them? Solve as many number of questions as you can. Okay. Easy one, 8 and 12. Tell me for 8 and 12. Come on, hurry up. 8 3s are 24, 12 2s are 24. That's what we have. So I hope you people got this. है ना? Correct? So you can take a snapshot for this, or maybe you can watch it in the video when you watch it again. Better अभी snapshot ले लो इसकी. 5 seconds. Take a pic. जल्दी जल्दी. Hurry up guys. Come on, hurry up. You need to be fast. Unknown galaxy, you are from unknown galaxy. That is why you are here. All right. We all are from Milky Way. Maybe you are from Andromeda or G17, whatever. All right, let's do this. I want you to do this one now. Try it out yourself. Thank you, Amartya. That's very encouraging. Although I am not the best, I am trying actually to do whatever I can and pass on whatever my learnings are since last 22 years. Oh, Tushar Mittal. Mittals are usually banyas, right?
I think so. So how are you from Nepal? Thank you, Shubham. Farzeen, yes. Alien spotted. Well said, well said. Right timing. Okay. A and B, they can complete a work in 20 days. B and C can complete the work in 24 days. A and C can complete the same work in 30 days. We know the LCM. 24 देखा ना आपने? 24. This has a 0 at the end, this has a 0 at the end. 24 into 5, 120, that's it. Because the other multiples don't have a 0 at the end. है ना? So you should be quite fast there. So into 6, into 5, into 4. कितना हो गया बेटा? 15. So 120 by 15. Alright, that is 8 days. But this is not the answer. This is not the answer. Alright? This is 2 times ABC. Actually. 2 times ABC. Is it? Why? Look at these. How many A's do you have? 1A, 2A. How many B's? Well, 1 and 2B. 1C, 2C. Don't read it as square. Alright? So this is 2 times A, 2 days work of A plus 2 days work of B plus 2 units work of C. Units in fact. So actually speaking, here if you say total days taken by A, B and C to complete this work will be 8 into 2, that is 16 days. Yes, Farzeen. यार ये 4 किसका आंसर दे रहे हो तुम लोग मुझे? ओके तुषार, ऑल राइट. सत्येंद्र तिवारी जी, जितने भी 4 हैं उनको सब 4 को आग में फेंक दीजिए, क्योंकि उत्तर जो है वो 16 है ना. आप ये 2 को इधर ले जाके यू आर डिवाइडिंग 8 by 2. नो, डोंट डू दैट. दिस इज 2 units. डबल यूनिट इज 8. राइट? सो सिंगल यूनिट विल बी 16. अच्छा हाँ, पूर्णिमा, you are here. Now Purnima, you remember at that time I told you beta that you are not supposed to use formulas. So try and understand this LCM method. If at all you're not able to understand, any one of you're not able to understand anything, I'm live, there with you, chatting with you, talking to you, alongside you, virtually आपके सामने हूँ. पूछ लो भैया, I'll try my level best. Yes, Ashok. How many A's do you have here? This is 2 days work of A plus 2 days work of B plus 2 days work of C. Double unit. Alright. When they have doubled their efficiency, then they are taking 8 days. So single efficiency, they will take 16 days. Right? It is inversely proportional, no? Efficiency is inversely proportional to time taken. Which efficiency? Work efficiency is inversely proportional to time taken. More the efficiency, less will be the time taken. Lesser the efficiency, more will be the time taken. पुष्पेंद्र, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार. आप जो मुझसे पूछ रहे हो तो मैजिक फिगर है. I don't know. I just want this
that your accuracy has to be 90% and you have to solve almost all the questions. अगर मैं DPC की बात करूँ ना, Delhi Police Constable की, so there are 60 questions in GS. Alright, the other 40 questions which are based on maths and reasoning, you should be able to solve them 100% correct. तो आपको वहां पे 40 तो चाहिए ही चाहिए, and out of 60 you need at least 45 to 50. So I would say 85 would be, a good level for deciding the cutoff. That should be your preparation. नहीं पूर्णिमा, बेटा आप देखो उसमें Monday to Friday the timings are 8 a.m. to 9 a.m. Saturdays and Sundays it is 8 a.m. to 10 a.m. and then we have 10:30 a.m. to 12:30 p.m. अभी इससे पहले भी एक सेशन हुआ था पूर्णिमा, दैट वाज अबाउट क्या था भाई लोग, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 प्लस पार्टनरशिप. चलो आगे बढ़ेंगे. डू दिस. Solve. Today RRB bank exam. Okay. फरजीन मैं हूं. फरजीन नहीं, सॉरी, अननोन गैलेक्सी. वो मैसेज बार बार रिट्रैक्ट कर रहा है यार, बार बार वो बेचारा चाह रहा कि 11वीं कक्षा का कोई स्टूडेंट है. मैं हूं यार, मैं 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग MBA PhD इन सबका स्टूडेंट रहा हूं. ऑलराइट, इफ ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, ABC can complete a work in 16 days, and A and B can complete that work in 20 days, then C alone can complete this work in how many days? So simple, no? A is given here, B is given here, C you need to find out. So out of ABC, if you subtract the work done by A and B, you will get the work done by C. ABC में से AB गया, क्या बचा? C बचा. That's it. All right. Okay, now guys, 16, 20, tell me the LCM. You have a 0 here, and this is a larger number. 20 not divisible by 16. 22s are 40 not divisible by 16. 23s are 60 not divisible by 16. 24s are 80 divisible by 16. हो गया काम. ये लो, into 5, this is into 4, but you will this time subtract. So you get 1. So C here will take 80 by 1, that is 80 days. Alright? To complete this work, working alone. देखो कितना आसान है यार. हाउ मच टाइम डज दिस टेक? हार्डली एनी टाइम. वैष्णवी, हाउ आर यू? So everybody got this. Good. लो भाई. Who told you that it is not simple? Everything is simple. Yes. I love that particular, tagline. Everything is simple. Provided you know how to solve it. Provided you have the right method.
अशोक प्लीज टेल मी विच पार्ट, डोंट गिव मी, टाइम वेस्ट होता उसमें, सीधा लिखो दिस पार्ट इज कंफ्यूजिंग, वो वाला पार्ट बताओ ना मुझे, मैं बताता हूं कंफ्यूजिंग सर, फिर मैं बोलूंगा कौन सा पार्ट कंफ्यूजिंग बेटा, फिर तुम बताओगे सर ये वाला पार्ट, 20 seconds 20 seconds 20 seconds, 1 minute gone. Why? There is a lag of 20 seconds. When I speak here, it is after 20 seconds that I reach you. अलग अलग गैलेक्सीज में है ना हम लोग. Okay, so what do you have? X can complete a work in 10 days. Y can complete that work in 15 days. All right. Now both will complete the work in how many days? How much work does X do? How much work does Y do? So LCM ले लो 30. How many units? 3 units. How many units? 2 units. है ना? तो बस हो गया फिर. अब यहां पे देखो X is to Y is 3 is to 2. All right, the work done by them. So in one day X does 3 unit work. In one day Y does 2 unit work. So together in one day they are doing 5 units work. Okay, और पैसे कितने मिल रहे हैं? 60K. All right, what should I multiply this with? 12K. So 5 into 12 is 60. Okay, so कैसे बांटेंगे भाई? यहां पर भी 12K, यहां पर भी 12K, so 36K and 24K. X ज्यादा काम कर रहा है ना यार. X is doing 3 units work in one day and Y is doing only 2 units work. So X should be paid more, no? Correct. Correct, correct. Yeah, Ashok, you got it, yaar. Very good. Pawan, Praveen. Yes, Chandan, correct. Hemant, Ravi, Swati, Vaishnavi, Virendra, Satyendra, Simple, Abhinav, Galaxy. All of you got it. Aman, you can go to our website. You would definitely get. Acha, do one thing, no? Otherwise, you go to the community. You know the community? Baju's YouTube channel, you have, first of all, at the top, you will find some buttons here. Home. All right. Then you have videos. Then you have playlists. Then you have, let us say, community. Okay. So there you click on DPC. All right. That particular poster that you have. Okay. Then you click on that, or else go directly to Baju's website. So you would definitely get some sample papers. They are there. All right. Download them. Practice them. They are with solutions, with key. Hurry up. You have to be fast. Time yourself. You should start timing yourself. Depends. Galaxy depends. I think every question in maths at the level of, of the level of DPC and Bihar SI should be easily conquered, within 45 seconds max. Maximum time is 45 seconds. And if you have practiced it well, then you would be able to solve it within 15 seconds to 30 seconds. Trust me, time yourself. After having solved 10 questions of one type, if you solve 11th question of the similar type, you would be able to solve it within 20 seconds, 15 seconds. That's all that it will take. दुर्गेश कुमार सिंह इज किंग. सही पकड़े हैं. ओके. यदि पी, क्यू तथा आर अकेले किसी काम को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं, if P, Q and R can complete a work in 20, 24 and 30 days respectively, and they complete a job working together,
then how much money will Q get out of rupees 1,20,000 wages received by them? तो चलो जी, P is 20, Q is 24, R is 30. Find out the LCM. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 24 दिया है, 120 आ गया, बात खत्म, याद तो है, into 6, into 5, into 4. Correct? So P is to Q is to R. Okay. 6 is to 5 is to 4. In one day, P does 6 units of work, Q does 5 units of work, R does 4 units of work. We don't want to know in how many days they will complete the work. What we want is, we want to distribute the money. So when you are going to distribute the money, then in that case, these units are important. All right, you don't need this LCM as such. You only need this LCM to calculate these units. ये LCM आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो units हैं यहाँ पर इससे calculate करने के लिए चाहिए होगा. That's all that you need. All right. तो कितना आ गया भाई यहाँ पे ये तो this is 15x. कितना पैसा है? पैसा बताओ, पैसा Q को मिला है 1,20,000. Is it or not? ओके तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1,20,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया यार. नहीं, कितना करना है बताओ, ठीक ठीक लगा लो. सो 5 2 जा 10, यू हैव अ 20, सो 25, 4 ओके आगे 3 0 है. Alright, how much money will Q get out of rupees 120,000 wages received by them? Wow, बहुत बढ़िया गलती की मैंने. टोटल 1,20,000 wages हैं. So 15x से आएगा 120k, है ना? So this will be into 8k. Alright, so Q here will be into 8k, so it will be a 40k. मैं समझा वो Q का दे रखा है 1,20,000. अरे बाप रे, सब वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये दिल्ली पुलिस कोर्स की टाइमिंग क्या है? सर पता नहीं लगा क्लास का. अभी आपको यहां पे मैसेज भिजवाते हैं, अभी मैसेज भिजवाते हैं. ऑलराइट, सो दैट यू पीपल नो दिस. शेड्यूल इज गिवन हियर, लिंक आपको आ गया है, आप देख सकते हैं. ऑलराइट, अब मैं जनरली भी आपको बता देता हूं वैसे. आई विल जस्ट टेल यू. ऑलराइट, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Then Saturday, Sundays you have marathon sessions. All right. So Saturday and Sunday you have 2 sessions. One 8 a.m. to 10 a.m. अब बेटा ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना. It is a free course that we are providing you. Alright, so at least you should know this. अजीब बात है वही है ये तो, है ना? जब कुछ मुफ्त का मिलता है वो भी हम लोग नहीं लेते. पैसे खर्च होते हैं तो शायद वैल्यू होती है. ऐसा होता है क्या? नहीं ना? ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो अहेड. चलो जल्दी करो यार, जल्दी करो बॉस, मेरे को बहुत सारा कवर करना है. कमान कमान, हरी अप. कमान बेटा, शाबाश. अशोक, अब आप मालूम पड़ गया. नाउ यू नो. यस चिरंजीवीज. बागुनारा, यू वांट मी टू टॉक टू यू इन तेलुगु? All right, very simple question. Look at this.
एक काम को 20 आदमी 50 दिन में करते हैं. अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय 20 men in 50 days. So 20 men, 50 days. Now they start working and 10 days later 20 more men join them. Then in how much time will the remaining work get completed? तो भाई एक काम को 20 आदमी 50 दिन में करते हैं, उनके 10 दिन काम करने के बाद उनके साथ 20 आदमी और मिल जाते हैं, तो कितने दिन और लगेंगे बचे हुए काम करने के लिए? अच्छा, पहले स्टोरी क्या है? लेट अस सी. 20 men initially can complete a work in 50 days. Now what happens after 10 days? Alright? कहानी में एक मोड़ आता है, twist and turn in the story. So after 20 days, forget about these 20 men who are joining. After 20 days, these 20 men are actually left with 40 days of work. That's it, no? Yes? Now what happens after 10 days? 20 more men join them. So 20 more join them. Now the total number of men are 40. Okay. Now you tell me, if 20 men can complete a work in 40 days, then 40 men, double the men, will complete the same work in how many days? 20 days, or if you want. All right. So they will take lesser number of days. So 20 by 40 into 40. All right. भाई ज्यादा आदमी होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा ना? यस, करेक्ट. Now try this because it is based on the previous logic only. Try this one. Hurry up. चलो जी, बहुत बढ़िया. एक काम को 45 आदमी 16 दिन में करते हैं. अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय 45 men in 16 days. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलराइट. सो 45 men can complete a work in 16 days. They start working and 6 days later. Alright, stop. So what happens 6 days later? First of all, with these 45 men, how much of the work they are left with? Now these 45 men after 6 days are left with only 10 days of work. Tell me. 45 men, they could complete a work in 16 days. They start working after 6 days. 6 दिन के बाद में क्या होगा? 16 दिन का काम में 6 दिन का काम हो गया. Out of 16 days, you have already completed, these 45 men have already completed 6 days work. How many days work is pending? How many days work is left? It is 10 days. But what is happening here? 30 more men, they join them. So plus 30. So now the number of men has increased to 75. If the number of men has been increased, the number of days will be decreased. All right, lesser time. ठीक है जी. So lesser by more into 10. All right, so this is 15, it will go. 15 threes are 15 fives are. Okay, into 10, so 2, so 3 into 2. The remaining work, which 45 men would have completed in 10 days, gets completed by these total 75 men
in just 6 days. So that should be the answer. Perfect. Most of you got it correct. Ashok, please check. I think small calculation mistake. Praveen, please check. Yes, Renju, correct. Yes, Sachin, correct. Yes, Pavan, correct. Chalo, then let's move ahead. Try this one. Prashant, I did not give you any formula. So you are asking the proof of which formula? I'm just using simple logic. If 45 men can complete a work in 10 days, then 75 men will complete that work in how many days? More days or less days? Less days, no? So out of 45 and 75, lesser by more. Okay? So 45 men, 10 days, 75 men, how many days? Lesser number of days. So out of these two, less by more into RHS, right hand side. Alright? Unitary method only I am doing. So this is 45 by 75 into 10. 15 3s are, 15 5s are, 2s are, you get 6. Now I'm just using logic here because let me tell you that maths is the favorite child of logic. Alright? It's not that logical reasoning is separate. It is treated as a separate subject as such. But everything in this world is based on logic, be it philosophy, be it biology, physics, chemistry, even commerce, even economics. Alright? It's only the history which is not logical because it is absolutely factual. With all illogical incidences and happenings. Alright, so M is 3 times faster than N. Now what does this mean? See, if N alone can complete a work in 24 days, then M alone can complete that work in how many days? 24 into 3, 72 days. More number of days. If M is faster than N, then M should be taking lesser time than N. Alright? So simple as that. M can complete that work in 8 days. 24 by 3. See? 8 into 3 is 24, no? So M can complete the work in 8 days. N can complete the same work in 3 times more number of days. Right? N is taking 3 times more, 3 times the time taken by M. So that is why M is 3 times faster than N. Alright? तो आ गया ना ये? Okay. If in how much time will the work get completed if both M and N work together? So 24 only we are getting here. So into 1, into 3, total 4. So M and N together will take 24 by 4, which is 6 days. That's all. Why, sweetie? Why by 9? Why 24 by 9? It should be 24 by 4. Vaishnavi, please keep on practicing. You will get too rich in maths. You're too poor, no? You will get too rich. Alright? Revise. Watch the videos again and again. और करते रहो ना यार, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो करो, and then keep on practicing from the practice exercises, whatever books that you have. Do this one fast, 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 fast.
Hariyappa. All right, let me do this along with you then. A is 3 times faster than B. All right, so here I am talking about the efficiency. All right, A is 3 times faster than B and B is 2 times faster than C. Efficiency. All right. So now it purely means that A is equal to 3B is equal to 6C. I can say that. B is 2C, no? इतना तो हम सबको आता है. All right. So now it is as simple as that. A is to B is to C. अब ये देखो ना यार, efficiency and time ratio are just opposite of each other. Yes? See, efficiency is inversely proportional to time. More the efficiency, less will be the time taken. Less the efficiency, more will be the time taken. है कि नहीं है? All right. Now have a look at this. All these will get ulta pulta. So in one day, the work done by A will be 6 units, the work done by B will be 3 units, and the work done by C is 1 unit. This is 1A, no? All right, so this is the work ratio. ठीक है? Let us say C, just a minute, I have to, B is twice C, just a minute, I'll just take the ratio here. Okay, A is 3 times faster than B, B is 2 times faster than C, 2 times faster, no, so 6C, correct तो है ये? All right, so A is 3 times faster. Okay, I had just took it as double. 6 is to 2 is to 1. वो 3 गलती से ले लिया था. देखो, 3 is to 1. Yes, and this one 2 is to 1, double. So B is double of C. A is 6 times C. A is 3 times B. All right, so this is the ratio in which they should divide the wages. So this is also the wage ratio. जो जितना काम करेगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे ना यार. So work ratio is same as wage ratio. Whosoever works more will get more money. See, in one day, B can complete 2 works, 2 unit work. Because A is 3 times faster than B, then A will complete 6 works, 6 units. In one day, C will complete 1 unit work. But because B is 2 times faster than C, B will complete double work, 2 works. Right? So if in one day C completes 1 work, then in the same one day A is completing 6 units of work. So this is the ratio in which they will divide it. Yes, अंकित उल्टा पुल्टा. हाँ, अब देखो, इसके लिए I'm just giving you a simple formula. Like I told you, band days. All right, same concept I'm giving you here. So just remember this: M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. All right. So what is M? Number of men. What is D? Number of days. What is H? Number of hours. What is W? Work. हो गया काम.
नहीं बेटा, मुझे आइडिया नहीं है, मैक्सिमम तो 85 तक जा सकती है, आप तो प्रिपेयर्ड रहो 90 मार्क्स लाने के लिए। रिकी, 90 मार्क्स का एम करो तो सेफ रहोगे यार। जो बिल्कुल कट ऑफ क्लियर करता है ना, वो सेलेक्ट नहीं होता है। लेट मी टेल यू, बी इट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इफ फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 80 इज द कट ऑफ एंड यू गॉट 80, definitely you are not getting selected because you will get rejected in the other stages. So to be safer, in every entrance examination, I'm giving you a thumb rule. In every entrance examination, your marks should be 20% above the cutoff. If there is a second stage or third stage. Alright? Because marks जो होते हैं वो cumulative लगते हैं, मिला जुला के लगते हैं, ऐड करके 20% हायर। हाँ सही कह रहा है। अरे यार, ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हेमंत, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सही पकड़े हैं, MDH मसाले। सो 12 men working 6 hours per day, 12 men working 6 hours per day, all right, they construct a floor of a building in 10 days. So they construct one floor. Then 10 men working 8 hours per day will construct 2 floors, double the work. In how many days? Cutting, 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 cutting. 4, 3, all right. This is what you have. So D here is 12 days. I think simple है ये तो, लेकिन simple questions आते हैं ना यार, क्यों नहीं आते? They definitely do come. So you should be prepared for both simple as well as difficult. हाँ, there are questions based on this. Please hurry up. ठीक है विनीता। यस यस स्वीटी, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन फायर ब्रिगेड भी बुला के रखना। हाय लाडोस डॉल वर्ल्ड। क्या हुआ? What happened? I think everything is all right. या हाय दीपांशी। चलो जी, अब ऐसे काम जो भी हो रहे हैं यहां पर, किस तरह से इन प्रश्नों का हल बनाना है जरा ध्यान से देखिए। द एक्स कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज। एक्स कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज। ही वर्कड फॉर 5 days एंड देन लीव्स। तो एक्स एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, उसने 5 दिनों तक काम किया, तथा शेष काम को वाई ने अकेले 20 दिनों में समाप्त कर दिया। सो एक्स कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days, ही वर्कड फॉर 5 days एंड देन लीव्स। Now y completes the remaining work in 20 days. So I would rather make a number line. यहां पे ना एक लाइन बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है? कार्य रेखा। क्या है ये? कार्य रेखा। This is a work line. Alright, I call it a work line. Alright, you can also call it a timeline. कितने टाइम में काम होता है? Alright, यहां से काम होगा स्टार्ट, यहां से काम होगा एंड। Here the work is going to start, here the work is going to end. Right, this is the working capacity of X. X की efficiency. X एक काम को 15 दिन में कर सकता है।
अब क्या हुआ, उसने 5 दिनों तक काम किया, एक्स वर्कड फॉर ओनली 5 डेज। ओके, सो दिस इज 5 डेज एक्स वर्कड। ध्यान से देखो, ऑलराइट, नाउ द रिमेनिंग वर्क वाई कंप्लीटेड, ओके, इन 20 डेज। बचा हुआ शेष कार्य जो था एक्स के जाने के बाद में, यहां पे देखो एक्स ने छोड़ दिया 5 दिनों के बाद में, उसके बाद में बचा हुआ कार्य जो है वो वाई ने कंप्लीट किया 20 दिनों में। सो एज एक्स लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, वाई कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। सो वाई वुड कंप्लीट दैट वर्क वर्किंग अलोन इन हाउ मेनी डेज? अगर वाई अकेला ये सारा कार्य करता तो कितने दिन में खत्म कर लेता? तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दिस इज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एक्स इज 15. So 5 days work of x. What is 1 day work of x? 1 by 15. So 5 days work of x, 5 by 15. x एक दिन में कितना काम करता है? x अगर पूरा काम 15 दिन में निपटा देता है तो एक दिन में कितना करता है? 1 by 15, 1/15। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 by 15, 5/15। क्लियर? So this plus 20 days work of y, together they complete one work. So this is 1/3. अब ये 1/3 को इधर ले जाओ यार, बार बार स्टेप्स कौन बढ़ाएगा? हटाओ इसे। तो क्या बचा? 2/3। हटाओ इसे। 20/y इज इक्वल टू 2/3। रफ वर्क ऐसे ही करते हैं, ये 10 कट गया, है ना? So y here is equal to 10 into 3, that is 30 days. Simple as that. तो ये लाइन बना के किया करो, just draw this line and then you can solve this question. Okay? All right, let's move ahead. Thank you, Amartya. All right. Now I'm starting, because we are, lacking of time, lacking in time, and I want you to complete, at least attempt some questions of pipes as well. Now, P एक काम को 20 दिनों में तथा Q उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है. So P can complete a work in 20 days and Q can complete the same work in 25 days. If Q works alone for 10 days, let's draw the timeline here. अरे if Q works alone for 10 days, so here only Q is working for 10 days, है ना? अगर Q अकेला 10 दिनों तक काम किया तो 10 दिन तक किसने काम किया? Q ने काम किया। तो शेष काम को P ने अकेला कितने दिनों में समाप्त किया? Alright, then the remaining work will be completed by P in how many days? How many days? We don't know. So let's name it as X. अगर Q ने केवल 10 दिन काम किया और उसके बाद में Q चला गया तो P ने बचा हुआ शेष काम कितने दिनों में खत्म किया? कितने दिनों में खत्म किया? हमें नहीं पता। जो हमें नहीं पता होता मैथ्स में वो क्या होता है? वो मिस्टर एक्स होता है, गायब। राइट, सो Q दे रखा है यहां पर 25 डेज ना, सो 10/25 प्लस X बाई P भी दे रखा है 20, टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क। चलो कटिंग स्टार्ट करो। सो 2s are 5s are, so this is 2/5. 2/5 I am taking here, so 1 minus 2/5, that is 3/5. 3/5 बचा, x by 20 बचा, 5 4s are 20, 4 into 3, alright, so x is equal to 4 into 3, that is 12. Step करके थोड़ा लिखना होता है यार, this is called rough work, this is how you do rough work. Alright, rough work should be as rough as possible. You should be the only person in the world to understand what you have done. Wonderful. लो जी जल्दी बताओ।
All right, so we can complete a work in 10 days. V एक कार्य 10 दिनों में समाप्त कर सकता है. W उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है. W can complete the same work in 20 days. उन्होंने 5 दिनों तक काम किया. They start the work together. So V and W, they are working together. Okay, so V is 10 days, W is 20 days, LCM is 20, this is 1, sorry, this is 2, this is 1, total is 3. All right, so together they will complete the work in 20 by 3, that is 6 2 by 3 days. All right, now this is only their capacity. So hold it. अभी लाइन बनाओ ना यहाँ पर यार. So for 5 days, V and W both work together. उन्होंने 5 दिनों तक काम किया. उसके बाद V ने काम करना छोड़ दिया. Then V stops working. So here V is gone. So now who's left? W. तो W शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? Then W will complete the remaining work in how many days? Don't know. X days. Now see from here, 5 days work, 1 day work. See, 1 day work of V and W is 1 by 20 by 3. That is 3 by 20. उल्टा करना होता है ना यार, है ना? And 5 days work will be how much? 5 into 3 by 20 plus X days work of W. W is 20. All right. By Y is equal to 1. तो चलो भैया ऐसा काम कर दो, है ना? Best है multiply this. So this is 5 3s are 15. Okay, so I am just taking this here, 15 by 20. So this becomes 5 by 20. X by 20 is equal to 5 by 20. 20 cancels. So X is equal to 5 days. So W will complete the remaining work in 5 days. Santosh, absolutely correct. Yes, Kola Priti. Yes, Purushottam. No, Farzeen, you spilled it. Correct, Dipanshi, if at all that is your name. अच्छा, एक काम करते हैं. Let me just हाँ, ये करो आप. Do this one. Hurry up, hurry up. You got to be fast. All right, you want me to explain the previous question again? Okay, people can solve this question. I'm just going back to the previous question. All right. So this was the question, no? What is the problem? Achha, let me do this again then. Not an issue. See, V here can do a work in 10 days, all right, and W can complete the work in 20 days. Okay, so what do you need to do here is draw the timeline. Now they work together for 5 days. See, they start the work together. So both V and W, they have worked for 5 days. Okay, so together, how much work do they do in 1 day? See, V is 10, W is 20, LCM is 20. So V and W together can complete the work in 20 by 3 days. So what is V and W's 1 day work? That is 1 by 20 by 3. I told you, no, it is 1 day work is 1 by capacity, number of days. 2 days work is 2 by number of days. 3 days work is 3 by number of days.
So that is nothing but 3/20. So 5 days work कितना होगा? 5 into 3/20. Now W here is working alone for X days. W शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? So X days work of W की कैपेसिटी दे रखी है आपको, that is 20. Together they complete one work. That's it. Okay. So if you want to cancel this, you can go ahead. This is 3/4 remaining. So 1 minus 3/4, that is 1/4. 4 and 20 will cancel. So X here is equal to 5 days. अरे क्वेश्चन कौन सा दिया था? ये वाला दिया था ना मैंने आपको, 23rd. Let's do this one. Okay, A, B, C complete a work in 10 days, 15 days and 12 days respectively. So A 10, B 15, C 12. If all three start working together, so together का तो आपको calculate करना पड़ेगा ना. So A is 10 days, B is 15, C is 12. 15 है ना यहाँ पे, ये 10 है तो 60 आ गया यहाँ पे LCM, क्योंकि 30 तो 12 से डिवाइड होता नहीं है. Okay, so this is 6, this is 4 and this is 5. Total units 15. All right. So A, B, C together can complete the work in 60/15. That is 4 days. ये clear है? बताओ भाई. भोलो भोलो ठहल ठहल. बताओ बताओ संतोष, वेयर इज इट दैट यू हैविंग अ प्रॉब्लम? प्लीज आस्क मी. डिस्क्राइब करो ना कहां पे प्रॉब्लम है, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा. ऑलराइट, सो नाउ इट इज गिवन टू यू दैट ऑल द थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट ए लीव्स 2 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्क. सो दैट मीन्स फॉर 2 days हु वॉज वर्किंग? ए, B and C, all the three were working. What happened after 2 days? A left. A chalo gayo. All right. And B leaves 1 day before the day when the work gets completed. So B here leaves, यहां पर B चला गया. कितने दिन पहले? 1 दिन पहले. काम खत्म होने के 1 दिन पहले B चले गए. अच्छी है, B is gone. राइट. तो बेटा अब ये बता दो, बड़ा सिंपल सी, मैं तो लॉजिक के बेस पे पूछ रहा हूं आपसे. मुझे ये बताओ 2 दिन किसने काम किया? हु वर्कड फॉर 2 days? फर्स्ट 2 days A, B, C. देन A लेफ्ट. देन हु वुड बी लेफ्ट वर्किंग? हु आर द पीपल वर्किंग? हेयर पीपल हु आर वर्किंग आर B and C. देन 1 day बिफोर द वर्क गेट्स एंडेड B लेफ्ट. सो लास्ट 1 day किसने काम किया? Who worked during the last 1 day? C. बताओ बताओ बताओ. You ask me. Tell, bolo, bolo. You understand this? Just understand this. They 3 start working together. तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो ये तीनों स्टार्ट हो गए इकट्ठे. लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दे, चला जाए. ऑलराइट. A leaves 2 days after the start of work. So when did A leave? 2 days after, 3rd day. So who worked for the first 2 days? First 2 days, because they have started working together, A, B and C are working. Alright. So after 2 days A leaves. Now who's working? Which are the workers who are left? B and C. And B leaves 1 day before the end of the work. So B has left 1 day before the work has ended. So this last 1 day, who's working? C alone worked the last day. Absolutely correct, Farzeen. अब बीच में कौन काम कर रहा था? Who was working in between? B and C.
For how many days? Don't know. Don't know. So x days. Unknown is x always. So tell me what is 1 day work of A, B and C. A, B, C can complete a work in 4 days. So in 1 day they complete how much? 1 by 4. So in 2 days they complete how much? 2 by 4. Alright. So here the work which was completed by A, B and C is 2 by 4. Alright. Here you will also have to find out for B and C. This is what you have for B and C, no? So B and C together can complete a work in how much time? See? B and C together can complete the work. Here you have 4 plus 5, 9 units for B and C. So 60 by 9. Alright. So what is this? This is 20 by 3. Correct? So 1 day work of B and C is nothing but 1 by 20 by 3. That is 3 by 20. मुझे ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया? Clear है? Yes? Alright. So there we go. So now we are working for x days. Who's working? B and C are working. So 2 by 4 plus 3x by 20. Alright. Plus 1 day work of C. C is 12 days, no? 1 by 12 is equal to 1 work they are completing together. ठीक है जी? ओके, तो करो यार इसको ऐसे कर दो ना. 4 3s are 12, 3 2s are 6. So this is 6 by 12. 6 by 12 plus 1 by 12 कितना होता है? 7 by 12. निकाल दो यहां से. Alright. So this is 7 by 12. If you reduce here, what are you left with? 5 by 12. So 3x by 20 is equal to 5 by 12. Cutting, start. Okay, so what you have here is जगह बची है? नहीं है ना, कोई बात नहीं. इसको यार 4 से करते हैं. So 4 5s and 4 3s. So x here is nothing but it is इधर ले जाओ इसको 25 by 9. Okay, so 9 to 7 by 9 days. ये तो x की वैल्यू है. But here the question is what will be the total time taken for the work to get completed. यहां पूछा गया है काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा. कुल टोटल का मतलब सब ऐड कर लो ना यार. X here is how much we found out? It is 2 7 by 9. So 2 7 by 9 plus 2 plus 1. How much is the total? Total here will be 5 7 by 9 days. काहे घबरा रहे हो बे? Okay, Dipanshi is clear here. हेमंत को मजे आ रहे हैं. फरजीन देख, जरा ध्यान से देख. फेंट वेंट मत हो बेटा, ध्यान से देख. You will get it. Allow yourself to absorb it. 2 days work plus x days work plus 1 day work. Alright. So x days work, 1 day work of B and C. 1 day work of B and C is how much? 3 by 20. Alright. So 3x by 20 हो गया. ये तो यहां निकल जाएगा ना. 1 day work of B and C. ये यूनिट्स यहां दी हुई हैं, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की हुई हैं. You have already done it. So from here only you should take it. No problem. Okay. So you got this. So 2 by 4 को 1 by 2 करके फिर 1 by 12 से ऐड करोगे, एक ही बात है, LCM 12 आएगा. So 7 by 12. Alright, that you will reduce from 1. So 5 by 12 and 3x by 20. You balance this out. अच्छा, कटिंग से दोबारा करा दूं? अच्छा लो यार, कोई बात नहीं. आप ही के लिए तो आया हूं बेटे मैं, अपना शहर छोड़कर. अच्छा ध्यान से देखो, A, B and C.
A, B and C can complete a work in 4 days. Agreed. So 2 days वर्क कितना होगा? 2/4. Agreed. अच्छा, आगे चलते हैं. स्टोरी यहां पे आती है बी एंड सी पे. बी एंड सी ने x डेज काम किया है. Alright, and B and C together can complete the work in how much time? See, 4 + 5, 9 units. Alright, और यहां पे ये 60 दिया हुआ है. ओके, सो 4 और 5 का यहां पर आप अगर 15 और 12 का ले रहे हो, 60 से भी लेते हो तो कोई इशू नहीं है ना. 9 तो तब भी ले सकते हो. वैसे तो 15 है, 12 है, 4 + 5, 9, 60. सो B and C can complete the work in 60 by 9 days. That is 20/3 days. Complete work. So 1 day work of B and C is how much? 1 day work of B and C is how much? 1 by number of days. Number of days कितने हैं? B and C के number of days कितने हैं? 20/3. वो नीचे आ गया ना, अब 3 नीचे था. Alright, so 3/20 हो गया. So B and C 1 day work is 3/20. So x days वर्क कितना होगा? 3x/20. अभी ना मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली. फिर 1 डे वर्क ऑफ C वो दिया हुआ है यहां पर 12 + 1/12. टुगेदर दे कंप्लीट 1 वर्क. अब ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो. Okay, with this value of x is coming out to be 27/9. अब ये कटिंग तो खुद कर लोगे अंकित. ऑलराइट, ओके. ये डीपीसी का क्वेश्चन है इनफैक्ट. अब ओरिजिनल क्वेश्चन सामने आ गया आपके. All right, now what do we have here? P अकेले कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है. P alone can complete a work in 7 days and तथा Q अकेले उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है. So P can complete a work in 7 days and Q can complete the same work in 21 days. So LCM is 21. This is into 3. This is into 1. Total is 4. दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत आसान. P and Q can complete the work in 21/4. That is 5 1/4, which is 5.25. इसमें तो कुछ था ही नहीं. अगला क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है. देखो, ये देखो, ये 2017 के क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं. ऐसा मत सोचना कि अब डिफिकल्टी लेवल मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इससे ज्यादा होगा, ऊपर होगा, डेफिनेटली ऊपर होगा. क्योंकि इस बार एज लिमिट भी बड़ी है ना, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर ऑल्सो. सो वेन एवर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज मोर, तो थंब रूल है हमेशा एग्जाम डिफिकल्ट बनाते हैं. ओके, ए तथा बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 40 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं. ए अलोन एंड बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 and 60 days. सो ए 40, बी 60, टुगेदर 120. दिस इज 3, दिस इज 2. हाउ मच? 5. सो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 120/5. ऑलराइट, दैट इज 24 days. ऑलराइट, लेकिन हुआ क्या? नंबर लाइन बन गई. दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं. बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट बी लीव्स द वर्क आफ्टर 15 days. ओके, आफ्टर 15 days.
So that means for first 15 days, A and B were working together, and after that, B left. Now A completes the remaining work alone, और शेष काम A अकेला पूरा करता है. तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? So भाई यहां पर अब X डेज के लिए कौन काम कर रहा है? A काम कर रहा है अकेला, क्योंकि B तो छोड़ गया, धोखा. Okay. So 1 day work of A and B is how much? It is 1 by 24. So 15 days work of A and B will be how much? 15 by 24. 1 day work of A and B, 1 by 24. Because A and B can complete a work in 24 days. Denominator में आता है ना यार number of days. शुरू से देख रहे हो ना class? I hope. Alright. So 15 days work will be 15 by 24. Alright. Plus X days work of A. A कितना है भाई? A 40 है. Together they complete one work. Okay, so 15 by 24, this goes by 3 5s, 3 8s, 5 by 8. 5 by 8 को अब मैं देखो रफ में कैसे कर रहा हूं इसको उठाया इधर डाल दिया, -5 by 8, that became 3 by 8. 3 by 8 is equal to x by 40. 8 5s 40. 5 यहां पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो x is equal to 5 into 3, that is 15 days, but that is not the answer, because he is asking you in how many days was the work completed. All right, so he wants total number of days. So this x is 15, and initially A and B worked for 15 days. पहले A और B ने 15 दिन कार्य किया, उसके बाद A ने अकेला 15 दिन में शेष कार्य कंप्लीट किया, तो कुल समय लगा 30 days. 30 days. 30 days. अब pipes and cisterns is something I would take in the next session. All right, जो continuing session मेरा जब भी होगा next week, तब I will take pipes and cisterns. It is very simple actually. You don't need much to do here. Okay, and whatever the questions which are remaining, I'll continue next week. All right, उसके बाद में करेंगे. एक question मैं भी और आपको करवा देता हूँ इसमें. चलो ये वाला फटाफट से कर दो इसको. डू दिस वेरी फास्ट. कम ऑन गाइस, हरी अप. आसान क्वेश्चन है यार, आसान प्रश्न है, जल्दी कीजिए. All right, so R can complete a work in 15 days, S can complete the same work in 20 days, और T वही काम 12 दिन में कर सकता है. 15, 20, 12. If all the three start building the pipeline, यदि तीनों मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, तो ये तीनों का तो फिर हिसाब किताब करना पड़ेगा ना यार. तो 15, 20, 12, 60, 4, 3, 5 यही आएगा ना. 15 चौके 20 दिया, 12 पंजे, तो ये हो गया 7 और 5 12 टोटल. ऑलराइट, सो RST together can complete this work in 60 by 12, that is 5 days. So what is 1 day work of RST? That is 1 by 5. Alright, अच्छा अब जरा लाइन ड्रॉ करो. हुआ क्या? Alright, here what happened? R stops working 5 days before the pipeline will be built or got built. तो R काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही छोड़ देता है. तो ये रहा 5 दिन पहले. ठीक है, क्या हुआ 5 दिन पहले? R ने छोड़ दिया. तो उससे पहले कौन कौन काम कर रहा था? RST. कितने दिन काम कर रहे थे ये लोग? पता नहीं, X days. Now R left 5 days before. R ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो कौन काम कर रहा है ये 5 दिन? ST काम कर रहा है. देखा, वही क्वेश्चन आ गया ना उसी तरह का. So here X days work of RST is going to be X by 5, because 1 day work of RST is 1 by 5.
So x days work of RST is x by 5. All right. Plus 5 days work of ST. ST, ये रहा ST. Okay. Now how much is it? 3 and 5. So ST, if you see, ST can complete this work in 60 by 8, 3 and 5. 3 units, 5 units, 8 units. LCM is 60. So 60 by 8. Okay. So this goes by 4. So this is 15 by 2. 7.5. So what is 1 day work of ST? 1 by 15 by 2. 2 gaya upar. So 2 by 15. That is 1 day work. All right. So ST here are now working together. How many days? 5 days. So 5 into 2 by 15. अरे यार यहाँ पे तो कटिंग वटिंग होगी यार थोड़ी. 3 together they complete a work. Okay. So once again, doing the work in rough. 2 by 3 goes here, minus 2 by 3. It becomes 1 by 3. अब सिर्फ यही बचा है और यही बचा है. All right. So x here is how much? Sorry, my fault. So x here is 5 by 3. That is 1, 2 by 3. Right. Now, what is it that he's asking you? Then the pipeline will be built in how many days in total? Total number of days. तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो x कितना हुआ? 1, 2 by 3. उसके बाद 5 days S&T were completing the work. So what is the total time taken? भाई total time taken here is ये 1, 2 by 3 plus ये 5, that is 6. 2 by 3 days. अगर आपको लगे अगले सेशन में कि 1-2 क्वेश्चन और ऐसे कराने चाहिए तो मैं तब भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं है. Alright? So anyhow, thank you so much. We will meet again next week. I'm not sure whenever we meet, we will continue with pipes. All right, and any other question which is there. So if at all you have liked the session, please subscribe. It is free of cost. All right, and we are trying to impart you quality education, absolutely free of cost, only for the sake of your career. So this is a noble cause which Byju's has launched. ठीक है जी, सिर्फ भलाई का काम कर रहे हैं, प्योर एजुकेशन, फ्री ज्ञान बांट रहे हैं. तो अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें. हमारे लिए भी मोटिवेटिंग होगा that we can make a difference in someone's life and we could help someone achieve their goal. All right. With that, I, Kapil Datta, sign off. Take care of yourself. Please stay safe and please make sure that you revise the class and do work hard. Thank you.